Namaskar everyone, my name is Rajat Gurnani and today we will be discussing a few notifications which have been issued yesterday itself on 5th May 38, 39, 40, 41, 42. 5 notifications were actually issued yesterday. So we will be discussing all those और जितने भी मेरे हिंदी में भाई बंधु हैं बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं हिंदी में भी सबका मतलब बताऊंगा क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया वो था नोटिफिकेशन नंबर 38। वो कहता है notification number 38, what does it says? It says companies can now file GST R3B through EVC as well. Earlier they were only allowed from DSC, which were actually hanging in our offices. So now the government has allowed to file through EVC as well, only for the period from 21st April 2020 to 30th June 2020. Now you can file companies GST R3B from EVC also. Another point which this notification says is now you can file GST R3B through SMS, which I totally deny right now because it has specifically written that it will be notified to a later date. So no procedures have been given how to send SMS everything. Next notification number 39. This notification is specifically for corporate debtors. Some relaxation have been given to corporate debtors. I'll simplify it for you. So it says corporate debtor who were not in default of filing GST returns prior to the appointment of IRP or RP are not required to follow the special procedure. Second relaxation which they have given is new registration to be obtained within 30 days of the appointment of the IRP RP or by 30th June 2020 whichever is later. तो ये 30 जून की 2020 की भी तारीख इन्होंने दे दी है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए है, नोटिफिकेशन नंबर 39। नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज नोटिफिकेशन नंबर 40, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, रादर मोस्ट अवेटेड जो था अभी तक का। ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी। सो इट सेज द इफ ई-वे बिल हैज बीन इशूड अंडर रूल 138 एंड इट्स वैलिडिटी इज एक्सपायरिंग बिटवीन 20th March 2020 टू 15th April 2020। अगर इस पीरियड के बीच में आपका ई-वे बिल एक्सपायर हो रहा है एंड इट हैज बीन इशूड ऑन और बिफोर 24th March 2020, 24 मार्च से पहले आपने वो इशू करा हुआ है, तो उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू 31st May 2020। तो जितने भी ई-वे बिल आपने 24 मार्च से पहले इशू करे हुए हैं और जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है कब 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक के बीच में, तो उनकी वैलिडिटी एक्सटेंडेड हो जाएगी 31 मई 2020 तक। ठीक है सर। नोटिफिकेशन नंबर 40। नोटिफिकेशन नंबर 41, एनुअल रिटर्न्स। So it says for the financial year 2018-19, GSTR 9 and GSTR 9C, the due date will be extended to 30th September 2020. Earlier it was extended to 30th June 2020. So now the new due date for annual returns is 30th September 2020. Notification number 41. Last and final notification number 42. It is specifically for Jammu and Kashmir and Ladakh region. So it says for registered person whose principal place of business is in Jammu Kashmir and return period GSTR 3B return period November 19 to Feb 20, the due date will be 24th March 2020. For Ladakh region, for return period November and December, the due date will be 24th March, and for the return period January 20 to March 20 only for Ladakh, the due date will be 20th May 2020. So I hope you have got all the amendments which have been made recently. So I actually simplified for you. बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये वीडियो देखा, बट मेरे को आपसे एक शिकायत है, आप सारी वीडियोस देखते हैं मेरी बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच ऑल द जीएसटी वीडियोस। आई विल बी मेकिंग इट रेगुलरली। ऑल्सो इफ यू हैवंट इंस्टॉल्ड ऑप्टोटेक्स इन योर लैपटॉप राइट नाउ, please install it. I have given all the numbers to install Optotax in the description video description. You can just call on those number and get Optotax installed. It is exclusively free for tax professionals and we are trying to help all the tax professionals so that you can start working from home from now onwards. Because लॉकडाउन चल रहा है तो अभी आप भी काम नहीं कर पा रहे हैं, बट घर से आप ऑप्टोटेक्स की मदद से कर सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड यही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। आपका अपना रजत गुरनानी। नमस्कार।